Starting with method of substitution. Solving pair of linear equations in two variable by using method of substitution. Okay, just a moment. So today we are going to discuss solving pair of linear equations in two variable. Okay, let me write algebraic method for solving. Algebraic method for solving pair of linear equation in two variable by using method of substitution. Okay, so today we will be using this method. Okay, we will be discussing this method. There is one more method of elimination, which we will be taking after maybe the next class. Okay, next class also we will continue this method of substitution. So we are trying to solve the equations, okay, by using method of substitution. See this name carefully, method of substitution. Okay, every time we will be substituting. Let's take a pair of linear equation in two variables. Suppose we are having x plus y is equals to 20, and if we are having x minus y is equals to, let's say, 12. Okay, this we are having pair of linear equations in two variable. Now how to solve it algebraically? Every time we will be solving it algebraically only. Okay, whenever we have to solve anywhere. Okay, in this chapter also, whenever we have to solve the equation, a word problem is there. Okay, and we have to frame the equation, we have to solve the equation, we have to write the solution, we will be solving it algebraically. Okay, until or unless it is clearly written that use graphical method, show it graphically, then only we will be drawing the graph. Otherwise every time we will be solving it algebraically. And as you know, graphical method, okay, it just don't come in exam. Okay, it can come, but generally it doesn't come in exam. This is really important, this we will be using, and this comes in exam. Okay, so we can name it, the first one as a equation number 1 and the second one as a equation number 2. Okay, and let's continue. So as the name says, this is method of substitution we are discussing. Okay, substitution method. So we will be taking x or y from any one equation, maybe from equation number 1 or from equation number 2. Okay, suppose you have picked, at first we need to pick a equation from here. So suppose we have picked equation number 1. Okay, can we pick any? Yeah, so we have picked equation number 1 and we are writing it. That equation number 1 is x plus y is equals to 20. Now here we are trying to isolate either x or y. What does that mean? Isolating means what? Isolating in COVID era, you must have heard this terminology. Isolate yourself. That means confine yourself in one place. Okay, just don't go and mix yourself with the family members or in the crowd. Just separate yourself, okay, in a room. So we are trying to isolate either x or maybe y in one side of equals to. Okay, we understand when we are having equation, there is a left hand side, there is a right hand side. Okay, so we will try isolating this x or maybe y. Okay, you can take again any variable. You can focus on x or maybe you can focus on y. So we need to isolate x or maybe y in one side of equal to. Isolating means just separately. Okay, so what am I trying to say? I am trying to say isolate x and you will be getting 20 minus y.
You could also have written isolating y, and this will be 20 minus x. Is it making sense? Yes, ma'am. Okay, so any one variable you need to pick from here and you need to isolate it. Okay, on one side of equal to, we have written it x equals to 20 minus y. We got from here, we got from equation number 1. Okay, if this was equation number 1, okay, from here only we got this one. Now we are going to substitute this x. We are going to substitute this as x. Okay, as the name says, method of substitution. Okay, so we will be substituting this x in the other equation. Okay, not in the first one. From the first one we got it, we are not going to put it in the first one now. Okay, we will be substituting it in equation number 2. Just see carefully equation number 2, Ryan. I'm going to copy paste it here. Okay, x minus y is equals to 12. So our equation number 2 was x minus y is equals to 12. This was our equation number 2. Please don't get confused. I am going to take this x and drop it at the place of x. In equation number 2, be careful. You are picking from one equation and substituting in other equation. If by mistake you are picking from one equation and substituting in the same equation, your result will be 0 is equals to 0. Okay, so that we don't want to do. We want to solve it. Okay, so at the place of x we are going to write 20 minus y. From 1 we got this x as x is equals to 20 minus y. Then already minus y, I'm just copy pasting over here this y. Wait. Hi Samia, how are you? Can you hear me? Can you hear me? I have already started, Samia. If you can hear me, please let me know. I will give you the brief. Just now I started. Can you hear me, Samia? See, if you will not respond, then how I will know that I need to give the brief, or you are just connected? Am I audible or not? Please let me know. Yes, ma'am. Okay, I am audible. Samia, please let me know. So see, Ryan, so far is it making sense? X is 20 minus y, and y I am writing as it is, 12 I am copy pasting as it is, equals to as it is. Is it making sense? Yes, ma'am. Okay, now in class 8, I think you have learned how to solve linear equations. Okay, how to solve linear equation having just one variable, right? In class 8 only you have learned it, right? Yes, ma'am. Okay, so are you understanding? When you are having a equation having two variable, we cannot solve it. It's not possible to take out x and y value. Okay, randomly, just I will write x minus y is equals to 12, and I will tell you, please tell me what is x, what is y, so you understand there are so many infinitely many solutions we are having. Okay, at a particular x and y we are not able to say. Okay, but when we are having pair, then we can find the solution. How? Okay, let's keep graphical solution aside for a while. You don't know about graphically and anything, so how we will take out x and y value? So this method is really useful. Okay, and will quickly tell us what is x, what is y. What we are doing, again, method of substitution we are discussing. As the name says, substitution, you have to take out. Okay, you have to just isolate. First you have to pick any one of the equation, either the first one or the second one. Okay, we have taken the first equation, x plus y is equals to 20. Now here what are we going to do? We will be isolating any one of the variable over here. Isolating means what? Isolating means keeping, okay, on one side of equal to. Okay, isolate, this terminology means keeping yourself separately. That means here, if we have picked this equation x plus y is equals to 20, we want to keep either x or y
on one side of equals to separately. That's why I'm using this terminology isolated. Okay, either x और y. तो हमें क्या करना है, या तो x या फिर y को इक्वल्स टू के एक तरफ ओके सेपरेटली रखना है. तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 सबसे पहले पिक किया. उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने x को आइसोलेट किया. मैंने बोला हम या तो x या फिर y किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट कर सकते हैं. जस्ट इक्वल्स टू के एक तरफ एलएचएस में. ओके सिंगल, और कोई टर्मिनोलॉजी और कोई टर्म्स वहां पे नहीं रहेंगे. सारे टर्म्स दूसरे साइड में रहेंगे. एक्स यहाँ पे ओके एलएचएस में आइसोलेट हो गया. इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे दैट y फ्रॉम हियर वी कुड हैव रिटन y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स. ऐसा करने से हम बोलते कि हमने y को आइसोलेट किया है एलएचएस में. ओके तो हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है. उसके बाद हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 से. अब हमें ये x जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है x के प्लेस पे. तो ध्यान से देखो, मैंने सेकेंड इक्वेशन को इस बार लिया है. अगेन आई एम रिपीटिंग, भूल से भी जिस इक्वेशन से हमने x या y निकाला है उसी इक्वेशन में फिर से हम पुट या फिर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. ओके तो हमने सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे इस बार 20 माइनस वाई लिख दिया और जो जैसे था वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया. ऐसा करने से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि अब हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है, हाँ या ना? Yes, ma'am. और अब तो हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. इट्स दैट सिंपल. यस इट्स दैट सिंपल. Okay, now we can focus on finding the y value from here. We will be getting 20 minus 2y is equals to 12. Okay, so minus 2y is equals to 12 minus 20, and from here we are getting the y value as, please tell me. Yes, 4. y is 4. We ended up getting the y value. Now we just have to find the x value. यहां तक कोई कंफ्यूजन है रयन एंड सामिया? No, ma'am. अब ये y वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो 1 या फिर 2. हमें हमारा x वैल्यू मिल जाएगा. क्या हम 1 में पुट करेंगे तो दूसरा x मिलेगा और 2 में पुट करेंगे तो कोई लाइक अदर वैल्यू हमें मिलेगा? नहीं. हम या तो 1 में पुट कर सकते हैं या फिर 2 में. हमें सेम आंसर मिलने वाला है x के लिए. ओके तो चलो 1 में पुट कर लेते हैं. आई विल शो यू बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस y वैल्यू इन 2 एज वेल. अभी के लिए चलो 1 में पुट कर लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. ओके हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फ्रॉम 1, ऐसे हम लिख सकते हैं कि अब हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1 लिया जहां पे क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 गिवन था. यहाँ अगर हमने y का वैल्यू 4 पुट किया तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 16, राइट? एंड वी आर डन. एंड वी आर डन. वी गॉट द सोल्यूशन algebraically. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया है. हमें हमारा सोल्यूशन पता लग गया, x वैल्यू 16, y वैल्यू 4, जिसे हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे x इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं. गेटिंग इट? गेटिंग इट रयन एंड सामिया? Yes, अगर हमने अगर हमने इक्वेशन 2 लेके y वैल्यू पुट किया होता तो, चलो देख लेते हैं. अगर हमने 1 ना लेके 2 में y का वैल्यू ड्रॉप किया होता तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि फिर से हमें 16 ही मिलने वाला था, हाँ या ना? नॉट. yes, ma'am. ओके तो मैं जो बोल रही हूँ स्टार्टिंग से ही, पहले किसी एक इक्वेशन को पिक करो.
किसी भी एक इक्वेशन को, चलो इसी सेम सेम इक्वेशंस को लेते हैं और इस बार इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। हमारा जो इक्वेशन था, the first equation was x plus y is equals to 20 and x minus y is equals to 12। ओके, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि हमें किसी एक इक्वेशन को सबसे पहले पिक करना होता है। तो पिछले वाले सिनेरियो में हमने इक्वेशन 1 को पिक किया था और मैंने बोला था इक्वेशन 2 को भी हम लेके ओके सेम वे में प्रोसीड कर सकते हैं, हमारा आंसर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ओके, सो इस बार हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे हम x या फिर y को आइसोलेट करते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, आइसोलेट का मतलब होता है हम x या y को इक्वल्स टू के एक तरफ रखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्टली हम पिक कर रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मिसगाइडिंग हो जाएगा। वैल्यू हम कैसे निकालें, ओके अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, इसीलिए मैं बार बार आइसोलेट 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 बोल रही हूँ। हम x को आइसोलेट कर सकते हैं, x विल बी 12 प्लस वाई। मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. ओके, या फिर हम y को भी आइसोलेट कर सकते थे। ओके, दिस विल बी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स। फिर हमें माइनस वाई हम नहीं चाहते, हम जस्ट y चाहते हैं। ओके, सो वी विल बी टेकिंग माइनस टू द अदर साइड, वहां पे हमें थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता। ओके, सो यू कुड हैव टेकन दिस विल बी माइनस 12 प्लस एक्स लाइक दिस। सो या तो हम x या फिर y को किसी एक को आइसोलेट करके ऐसे एक इक्वेशन को अपने इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम याद रखना हमने ये सब कहां से किया है, इक्वेशन नंबर 2 से। ये सब हमें कहां से मिला, इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब ये जो एक्स है हमारे पास, इसे हमें सब्सटीट्यूट करना है। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। जहां से मिला है वहां सब्सटीट्यूट हम नहीं करेंगे, हम दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर गलती से भी बाय मिस्टेक अगर हमने इक्वेशन 2 को पिक करके इक्वेशन 2 को फिर से हमने पिक किया और इसी में x के प्लेस पे 12 प्लस वाई अगर डाल दिया, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल टू 12। ओके, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पर्पस है x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना। ऐसे स्टेज पे पहुंच के ओके जस्ट दोनों साइड इक्वल दिखाना, प्रूफ करना, ये हमारा पर्पस नहीं है, राइट? राइट, Yes, तो हम बाय मिस्टेक ये नहीं करेंगे। हमने ये जो फाइंड किया है x इज इक्वल्स टू 12 प्लस वाई, ध्यान रखना, हमें ये कहां से मिला है, वी हैव गॉट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस x इन इक्वेशन नंबर 1, as the name says, method of substitution। Okay, so we are going to substitute this x in equation number 1. Equation 1 was x plus y is equals to 20। Okay, so from 1, which was x plus y is equals to 20, here we will drop the x, that is 12 plus y, and you can see how easily now we will be able to take out the y value from here. Can you tell me what is the y value? Forget about everything and just focus on this circled part and tell me the y value. That's it. 4. 4. Okay. Previously also we had got y as a 4. Let's check it. Yeah. Can you see? Okay. Now this y value you can substitute in any of the equation, either first equation or second equation, you will end up getting the x value. Let's find the x value. So let's take the first equation, x plus y is 20, from 1
x plus y is 20. Here we will drop the y value, that is x plus 4 is equals to 20. X is equals to 20 minus 4, that is 16. We got x value as a 16 and we got y value as a 4, and we have our solution now. Clear? Yes, ma'am. Okay, let's take few more examples. Suppose now our equation looks like this. 2x plus y is equals to 28. Okay, and 5x plus 3y is equals to 32. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को हमें चूज करना होता है, या तो 1 या फिर 2, और फिर वहां से किसी एक वेरिएबल को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा. तो इस बार थोड़ा ध्यान से हम इक्वेशन चूज करेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम आइसोलेट करने बैठेंगे, ओके, व्हेन वी विल ट्राई डूइंग द आइसोलेट, लाइक आइसोलेटिंग वन ऑफ द वेरिएबल, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को पिक कर लिया, ओके, चलो देखते हैं. अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को पिक कर लिया और हमने ऐसे लिख लिया 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 32, और अब मैंने क्या बोला था, किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट हमें करना पड़ेगा, या तो x या फिर y. तो अगर हमने x को आइसोलेट करने की कोशिश की, 5x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 3y. ओके, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 32 minus 3y by 5. Yes or no? Is it making sense? Is it making sense? Rayan and Yes, Samya. Okay, so what are we doing? We have isolated. That's what we have discussed. Okay, we have to do like this. When using the method of substitution, yes, we have to do it like this only. But क्यों हम फ्रैक्शन के चक्कर में पड़े? Okay, why we are wasting our energy? Why we are going to waste our energy with this fraction? X value is of, can you see, x is just a fractional term, and this fractional term you are going to put it in equation number 1. Okay, we will be able to take out the answer, but the process will be really tedious. Are you understanding, due to this denominator? yes, ma'am. Okay, तो हम सोचेंगे कि प्रोसेस तो अब हमें पता लग गया. ओके, इजी हम कैसे इसको बनाएं, इस क्वेश्चन को हम इजीली बिना डेनोमिनेटर, बिना फ्रैक्शन इनके को इन्वॉल्व किए कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अब फिर से हम ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखेंगे. और क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर हमने 1 को पिक कर लिया होता, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28, और यहां से x नहीं, ओके, हम y को आइसोलेट करते हैं, दैट इज 28 माइनस 2x, तो हमें डेनोमिनेटर एंड ऑल कुछ मिलता ही नहीं. यस और नो? Yes, ma'am. तो अब हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा. ओके, पिछले वाले इक्वेशन में हमने ये सब क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि पिछले वाले इक्वेशन में किसी को भी, ओके, आइसोलेट करना, x या y, किसी भी इक्वेशन को चूज करना, इट वाज द इक्वेशन वी वर हैविंग, x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं था. ओके, द कोफिशिएंट वाज 1 and the coefficient of y was also 1 in, okay, both the equation. Okay, the second equation was having the coefficient of y as a -1. तो यहाँ पे सब कुछ बहुत सिंपल था, डेनोमिनेटर हमें मिलता ही नहीं यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को लेने से. बट ओके, जब हम एक्चुअल में इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हम ऐसे इक्वेशन को भी इनकाउंटर करेंगे. तब हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, हमें ध्यान से ऐसे इक्वेशन चूज करना होगा जहां से किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट जब हम करें, तो अगर हमें डेनोमिनेटर ना मिले तो अच्छा है, बट इन केस अगर हमें डेनोमिनेटर मिलेगा ही मिलेगा, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, इज इट मेकिंग सेंस? Yes, Okay, so we have taken equation number 1 and we have isolated y over here.
y को हमने आइसोलेट किया क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 था। ओके, ऐसा करने से हमें कोई डेनोमिनेटर अभी नहीं मिला है। दूसरे आरएचएस में जो भी हमारे पास टर्म्स है, ओके, 28 - 2x को कुछ भी डेनोमिनेटर हमारा नहीं है। ओके, नाउ वी विल बी सब्सटीट्यूटिंग इट in the other equation. So this we got from 1 and we are going to substitute this y in 2. Okay, so equation number 2 I am copy pasting. 5x plus 3y is equals to 32, and our y was 28 minus 2x. So here at the place of y, okay, we will use a bracket and we will substitute 28 minus 2x. Okay, other side 32 as it is I am writing, this 3 as it is I am copy pasting, this 5x as it is I am copy pasting. Is it making sense, Rayan and Samya? Yeah. Okay, and be careful, just use the bracket while substituting this y. Okay, and then we just need to solve it. Again you can see this is again a linear equation in one variable जो तुमने class 8 में सीखा है. Okay, take out the x value from here and tell me what is the x value. As you understand, x का value decimal भी हो सकता है, like fraction भी हो सकता है. जब भी हमें fractional x का value मिलेगा हम fraction में ही ऐसे ही छोड़ देंगे. Okay, and negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, it can be anything. Okay, any real number. So yeah, please take out x value from here and tell me what are you getting. Yes, what you got? Yes, Rayan. Samya, can you hear me? Yeah, minus 52. Minus, let's check it. So 5x plus 8 3 times 24, 4 carry 2, 2, 2 3 2 times 6 7 8 minus 6x is equals to 32. Okay, you must have done your way. I am doing my way. So this will be minus x. I am just taking this x to this side and 32 to this side. So 84 minus 32. Is it minus 52 or just 52, Ryan? Minus 50. Minus. Okay. तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा, एक्सप्रेशन, द इक्वेशन, राइट? Yes, ma'am. अगर हमने 5x माइनस 6x किया तो हमें माइनस x मिलेगा, राइट? Yes.
और इस 84 को अगर हमने दूसरे साइड में शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 32 माइनस 84, दैट इज नेगेटिव 52. Here minus x is equals to minus 52, that means x is just 52, right? Yes, ma'am. Okay, so we ended up getting the x value without wasting our time. Okay, in board exam your purpose should be, you should solve each and every question, but you should not waste your time anywhere. Okay, because sometimes student says that we were running out of time due to that this question, that question, so you have to work smartly. Okay, so this is how you can see how easily we got x value. If we would have taken other equation where the denominator, okay, will be there, then it will be really tedious. Okay, it will be so many simplifications, so many calculation will be involved. Okay, we will be working on such question when we don't have any other option, and you will realize that yeah, that is time taking. We ended up getting the x value. Now we also have to find the y value. Processes, after getting x, you choose any equation, either the first one or the second one, and just substitute this x. Okay, so our first equation is this, second equation is this. We can take any equation again while choosing equation for finding the other variable. Okay, please work smartly. You can, okay, if just by looking at the equation it seems that पहले वाले इक्वेशन में अगर हमने पुट किया तो थोड़ा सिंपल होगा, तो हम ऐसा ही इक्वेशन चूज करेंगे. ओके, कहीं पे भी हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वैसे यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम पुट करें थोड़ा बहुत मतलब इट्स मोर और लेस सेम. ओके, तो चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन पिक कर लेते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28. हमारे पास इक्वेशन वन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28. यहाँ पे हम x का वैल्यू जो हमें मिला है दैट इज 52 पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा. ओके, सो दैट मीन्स 2 इंटू 52 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28. y इज इक्वल्स टू 28 माइनस 104. Okay, and we ended up getting the y value. Is it clear the process? Yes, ma'am. Now I'll be giving you equation and you will be solving. Okay. So the first equation is x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. Please take out x and y value by using the method of substitution. X is 9 and 5 is 10. X X is is 9 9, and Y is 5. y is 5. Okay, let's check it. Yes, ma'am. So we can take any one, any equation. Suppose I have taken the first one. From here, we have to isolate x or y. So I'm isolating x. Okay, 14 minus y. Rayan, you must have done your way. Okay, I'm doing my way. Okay, you can, we can pick any equation. We can isolate any variable. So here, both the equations are really, really, really simple. Okay, we can choose any one. So this is what I got from one. Okay, from one I got. Samia, if you are able to hear me, okay, if I am audible to you, then please let me know if it is making sense or not. Now we will be substituting this x in equation number 2. So from 2, or you can write substituting x equals to this 14 minus y in equation 2 like this. Okay, you need to write. Then we will be taking the second equation, that is x minus y is equals to 4. Here we will drop the x, that is 14 minus y, 14 minus y, and
Everything else we will copy paste as it is. So we are having 14 minus 2y is equals to 4. Okay, so 2y minus 2y is equals to 4 minus 14. That means minus 12. And wait, am I doing any mistake? No, not 12. It's just 10. Yeah, I am. Okay, it's minus 10. Minus 2y is equals to minus 10. Y is equals to 5. Okay, we ended up getting y value as a 5. We are supposed to find the x value. We can substitute this y value in any one of the equation. Okay, either the first one or the second one, we will be getting the x value. Okay, let's do few more questions. Suppose we are having 7x minus 15y is equals to 2 and x plus 2y is equals to 3. We have to solve this two equation by using the method of substitution to take out the solution. अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली हमें वर्क करना होगा. ध्यान से हमें सबसे पहले इक्वेशन चूज करना होगा जहां से किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करते टाइम अगर हमें डेनोमिनेटर एंड ऑल ना मिले तो बेटर है. आई एम गिविंग यू 7 minutes. Okay, please do it and tell me the answer. What you got, Ryan? Yes. Can we do it together or you are almost there? No. You are doing it?
No, I can't do it. ओके, लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहले हमें कोई एक इक्वेशन चूज करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट वन या फिर द सेकेंड वन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन अगर हमने चूज किया 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पे हमें किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है। ओके, या तो x या फिर y। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट है 7 एंड y का भी कोफिशिएंट है -15। अगर हमने किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट करने के बारे में सोचा भी, ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड वी विल बी गेटिंग द डेनोमिनेटर। हमें क्या मिलेगा? 7x इज इक्वल्स टू 2 + 15y। x इज इक्वल्स टू 2 + 15y/7, राइट? राइट। Yes. अगर हमने y को कर लिया होता तो क्या वो सिंपल होता? बिल्कुल नहीं। ओके, अगर हमने y को आइसोलेट किया होता तो भी ये सिंपल नहीं होता। ओके, इट विल बी, यू कैन टेक y टू दिस साइड। ओके, जब भी नेगेटिव टर्म होते हैं हम किसी भी साइड में, ओके, टर्म्स को लिख सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें लेफ्ट में ही आइसोलेट करना होता है। नो, 7x - 2। Okay, so y will be this 15 we can send to this side, will come in the denominator. Can we see, Ryan, y is 7x - 2/15? Yes. दोनों में से कोई भी सिंपल नहीं है। और हम एज मच एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम इस सिनेरियो को तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से सॉल्व करना पॉसिबल है। हाँ, वी विल बी डूइंग सोल्यूशन लाइक दिस, बट ये बहुत टीडियस हो जाएगा। ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम इक्वेशन 1 को पिक नहीं कर सकते। ओके, नाउ यू कैन सी क्लियरली। अगर हमने इक्वेशन 2 को पिक किया होता तो क्या सिंपल होता? x या y किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना ऑफ कोर्स सिंपल होता। प्लीज चेक इट। x + 2y इज इक्वल्स टू 3। और क्या तुम्हें दिख रहा है दैट वी कुड हैव टेकन x इज इक्वल्स टू 3 - 2y, जहां कोई डेनोमिनेटर ही हमें नहीं मिल रहा है? यस और नो? गेटिंग इट, रयन? तो हमें इक्वेशन देख के पता कैसे लगेगा कि कौन से इक्वेशन को पिक करें? हमें पता लगेगा तब जब हम ध्यान से देखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, 7। ओके, आइसोलेट करने के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 15। ओके, अगर हमने y को आइसोलेट करने की कोशिश की, ओके, एक साइड में सेपरेटली रखने की कोशिश की, तो ये 15 डेनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, तो ये भी हम नहीं सोचेंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन में ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट 1 है। तो क्या सिर्फ इक्वेशन देख के समझ पा रहे हो रयन कि हम सेकेंड वाले इक्वेशन से x को आइसोलेट करेंगे तो इजी होगा, हाँ या ना? गेटिंग इट? यस रयन, एम आई ऑडिबल? Yes. कैन यू हियर मी? Yes. No. इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Yes. No. ओके, तो हम कोफिशिएंट देख के ये मत सोचना कि अगर कोफिशिएंट 15 है या 7 है या 3 है तो हो सकता है वो कैंसल आउट हो जाए। नो, कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नंबर नहीं है यहाँ पे। ओके, इक्वेशन से जहां दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, हम एक वेरिएबल को एक साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेनोमिनेटर बहुत रेयरली कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने का तो चांस, अब उस बारे में हम सोचेंगे नहीं। हम सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा, ओके, इक्वेशन हम पिक कर ले जहां से किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करते टाइम हमें डेनोमिनेटर ना मिले। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब कोफिशिएंट उस वेरिएबल का 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो x है इसका कोफिशिएंट 1 है, और वी कैन सी क्लियरली दैट x + 2y इज इक्वल्स टू 3, मतलब x इक्वल्स टू 3 - 2y। ये हमें कहां से मिला? इक्वेशन 2 से मिला है हमें ये। तो अब हमें इस x को कहां पे पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुट करना है। चलो पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या है? 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2। सो फ्रॉम 1, 7x - 15y is equals to 2. Okay, here x is 3 - 2y. Okay, x is 3 - 2y. 3 - 2y.
7 I'm just copy pasting as it is. 15y I'm copy pasting as it is equals to 2. And now we can see it became a linear equation in one variable. Okay, and solving it is really simple. We just need to open the bracket carefully. So 21 minus 14y minus 15y is equals to 2. 15 and 14, 29. Okay, minus 29y. So we are having minus 29y is equals to 2 minus 21. Okay, 2 minus 21 means 19, 20, 21. Minus 19, right? Right, Ryan? Yes, ma'am. Y is equals to minus 19 by minus 29. ऐसा भी आंसर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. ओके, हमारा y वैल्यू क्या मिला हमें? 19 by 29. दिस इज द y वैल्यू. Okay, we have to take out x value. We can substitute this y value in any of the equation. But before that, please tell me, so far, is it clear, Ryan? Yes. Okay. Now we need to substitute this y value in any equation, either the first one or the second one. Okay. तो क्या हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर ले, क्योंकि वहां स्मॉलर स्मॉलर नंबर्स है, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो. आ रहा है समझ में? Yes. ओके, तो हम ये जो y वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. क्या फर्स्ट में नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. ओके, वी कैन सब्सटीट्यूट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन एज वेल, बट हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाए. बट द सेकेंड इक्वेशन इज ओके. 2 is there, 3 is there. Okay, let's do it. So x plus 2y is equals to 3. x plus 2y is equals to 3. y हमें क्या मिला है? 19 by 29. y हमें मिला है 19 by 29. ओके, 2 मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 3. x प्लस, कोई बात नहीं, अगर हमें ऐसे फ्रैक्शंस भी मिलेंगे, बहुत पेशेंटली, बहुत ध्यान से, केयरफुली वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन. सो 19 into 2 is 38. Okay, so 38 by 29 we are having is equals to 3. Now we will be shifting it to other side. So x is equals to 3 minus 38 by 29. कोई बात नहीं, क्लास 10 में ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्रैक्शन होंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. तो ये तो बहुत सिंपल है. ओके, यू जस्ट नीड टू टेक आउट द एलसीएम 29. What will be there in the numerator, Ryan, over here? 87. 87. 87. Yeah, 87 minus 38. Okay, 9, and this is 7 minus 3, 4. 49 by 29. X value हमें क्या मिला? 49 by 29. And Y value क्या मिला? 19 by 29. And fine. This is the solution. Got it? Got it, Ryan? Yes, ma'am. I'm giving you few equations. Okay. Now only just copy all the equations and try solving by yourself. Finding the solution by using the method of substitution. अभी बुक से सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बुक में सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन है और सारे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं. तो पहले तो तुम्हें बेसिक, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, जब ऐसे सिनेरियो आते हैं तो इसे पहले मास्टर करना होगा. फिर हम प्रोसीड करेंगे जो हमारे पास बुक में दिए हुए हैं. फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो, रूट वाले नंबर्स इन्वॉल्व हो, इरेशनल, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे. बट पहले इस कंसेप्ट को मास्टर करेंगे. ओके, सो आई एम गिविंग यू फ्यू इक्वेशंस. जस्ट अ मोमेंट. Okay, better I'll be sending you as a homework. Okay,